हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी चैनल। आज हम पॉलिटी के एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की मूल बातें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन अगस्त 29, 1947 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति की स्थापना की। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का गठन किया। उन्होंने 21 फरवरी 1948 को विधानसभा के अध्यक्ष के लिए भारत का एक मसौदा संविधान प्रस्तुत किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर थे। वो थे अलाउद्दीन कृष्ण अय्यर, एन गोपाल स्वामी, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्तर और डी पी खेतान। 26 नवंबर 1949 को प्रारूप का अंतिम रूप पूरा हुआ और ये 3 क्रम में तैयार हुआ। The provision related to citizenship, election, etc. was implemented with immediate effect. Second question, objective resolution was moved in the first session of the Constituent Assembly by Pandit Jawaharlal Nehru on 13 December 1946. पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के पहले स्तर में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधानिक सभा के पहले स्तर में संकल्प लक्ष्य लिया गया था। चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 22 जनवरी 1947 को सभा में काफी विचार विमर्श और तर्क वितर्क के बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अपनाया गया। इस संकल्प में मुख्य उद्देश्य ये था, राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देना और उसकी आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के साथ सरकार का एक संघीय रूप होना और न्याय की गारंटी और सुरक्षा करने के लिए तैयार रहना, अल्पसंख्यकों की पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना। थर्ड क्वेश्चन, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया है। इसे इटालिक स्टाइल और ब्यूटीफुल कैलीग्राफी में लिखा गया था। हर पेज को ब्यूटीफाई और डेकोरेट किया गया था शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा। with 25 parts containing 48 articles and 12 schedules. The Indian Constitution is the longest written constitution of any sovereign country in the world. The Constituent Assembly, which first met on December 9, 1946, took precisely 2 years, 11 months and 18 days to come up with the final draft. Fourth question, who was the chairman of the Union Power Committee of the Constituent Assembly of India? जवाहरलाल नेहरू। भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। An idea for a Constituent Assembly of India was proposed in 1934 by M.N. Roy. The Constituent Assembly appointed a total of 22 committees to deal with different tasks of constitution making. The assembly met for the first time in New Delhi on 9 December 1946 and its last session was held on 24 January 1950. Fifth question, by vesting the residuary power in the Union, the Indian Constitution has followed the Canadian system. अवशिष्ट शक्तियों के संघ में निहित करके भारतीय संविधान ने निम्नलिखित में से किसका पालन किया है? कैनेडियन सिस्टम का। The provision of federation with a strong center, residuary power of the center, the appointment of state governor by the center, and the advisory jurisdiction of the Supreme Court are all borrowed from the Canadian Constitution. Sixth question, the member of the Constituent Assembly which drafted the Constitution of India were elected by the legislative assemblies of various provinces. भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस
provinces. The Constituent Assembly took almost 3 years to complete its historic task of drafting the constitution for independent India. During this period, it held 11 sessions covering a total of 165 days. Of these, 140 days were spent on the consideration of the draft constitution. As of December 1947, the assembly had 299 members, 229 members elected from the 12 Indian provinces and 70 members nominated from 29 princely states. Question number 7. Match the following pair sources. Feature borrowed. Impeachment of the president borrowed from US. Emergency provision borrowed from Government of India Act of 1935. And joint sitting of the two constitutional houses of parliament. This one borrowed from Australia and prerogative jurists British. So option number 3 is correct. Question number 8. The Constitution of India was adopted on November 26, 1949. भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था. The Constitution of India was adopted on 26 November 1949 by the Constituent Assembly of India. The provision relating to citizenship, elections, provisional parliament, temporary and transitional provinces were given immediate effect from November 26, 1949. The whole constitution became effective on 26 January 1950. It is the longest written constitution of any country on earth. B.R. Ambedkar, chairman of the drafting committee, is widely considered as to be chief architect. Question number 9. Who described the preamble of the constitution as the political horoscope of the Indian constitution? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी. भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी. The preamble of the Indian Constitution is based on objective resolution. It was drafted and moved by Pandit Jawaharlal Nehru and adopted by the Constituent Assembly. In the historic case of Keshav Anand Bharti 1973, Supreme Court held that preamble is a part of the Constitution and can be amended under Article 368, subjected to the condition that no amendment is done to the basic structure. The preamble has been amended only once so far in 1976 by the 42 Constitutional Amendment Act. The term socialist, secular and integrity were added to the preamble through 42 Amendment Act in 1976. Socialist and secular were added between sovereign and democratic. Unity of the nation was changed to unity and integrity of the nation. By the 42 Constitutional Amendment Act 1976, 3 new words, socialist, secular and integrity are added to the preamble. When did the Indian Constituent Assembly adopt the Constitution? 26 नवंबर 1949. भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? 26 नवंबर 1949. The Constituent Assembly was set up on 6 December 1946. It was constituted under the provision of the Cabinet Mission Plan 1946. The first official meeting of the Constituent Assembly was held on 9 December 1946. Sachidanand Sinha was appointed as the temporary chairman during its first meeting. Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent president of the Constituent Assembly on 11 December 1946. The Constituent Assembly also appointed H.C. Mukherjee as its vice president. The constitutional advisor to the Constituent Assembly was B.N. Roy. The Constitution of India came into being on 26 जनवरी 1950. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए.